Morning students. So beta today we are going to see our next program which is also a very simple one. Okay, so first give a look to the program itself. See that what is given. We have to write a program to input the elements in a square matrix of size 4 into 4. Okay, and print the matrix in following format. Only border elements are printed. So now children look at the figure. We have to store the elements in a matrix of size 4 into 4. Okay, and after that we need this output. In this output children, you can see that the matrix is get printed but only the border elements are there. Okay, inner elements are not printed. Okay, so we know that how to find the sum of the border element, and the same logic children we are going to use here in this program also. There is one more thing you have to take care about, that in the program statement children, see that what is told, write a program to input the element. Okay na children, so you have to take care of this ki in this program we are not going to initialize the values. Okay children, when they say ki you have to store the elements in a square matrix, then you have the options, either you initialize the element or you can also input the elements in the matrix through the keyboard. But when here in the program it is clearly stated ki we have to input the element, it means children you have to run the loop and you have to take the entry of the element from the user through the keyboard only. Okay, so first of all we have to create a matrix of 4 by 4 and we have to take the entry from the user. Okay, so now just look at the program. So import java, the name of the class is given, after that public static void main scanner, these four lines you know very well. And from here my program start, it is told integer matrix equal to new integer 4 by 4. So all of you know that what will happen, a matrix of size 4 into 4 will be created. Okay, and their row index number will be from 0 to 3. In the same way column will be also created and name of the matrix will be mat. After that children, the first thing we have to do, we have to input the element for that. So for that purpose I taken two variables r and c, r for row and c for column. And after that, this part of the program, as all of you know it very well, this program segment takes the entry from the user, and how it happens, it has been told to you in the first program of the matrix. Okay, so first of all you will execute the loop of row from 0 to 3, and then the loop of column will execute from 0 to 3, and inside these two nested loop the entry of the elements will be taken. Okay, mat rc, so you know what will happen, all the values will be entered. Okay, this part I am not going to explain in today's session, as I hope that all of you remember that. So children, when you entered all the input, now your next job is to print the element in the format as shown in the program. And in the output part of the program we can see that on the border elements are printed, and children, at the place of inner element, okay, we have to print the only blank spaces. Okay, for example here in this figure we can see that these four elements are not printed, which are the inner element. Okay, means this part. Okay, that circle part will be not printed. In place of the inner element we can print the blank spaces. So now look at the program here, what is told, system.out.println matrix is. Okay, first a message will appear ki your matrix is like this, and then children we are running the program. So first you will execute a loop of row.
r equal to 0, r is less than 4, so means you know that the loop of r will run from 0 to 3. Then inside the loop of r, the second loop of c will also run from 0 to 3. So you know कि first time when the r is 0, so then the loop of c will run from 0 1 2 3. Okay na, r is 0, then loop of c will run from 0 1 2 3. Means these four elements cell address will be 0 0 0 1 0 2 and 0 3. Means we are representing the elements of the first row, which are 0 0 0 1 0 2 and 0 3. And you know that we have to only print the border element, and if an element belongs to the border element or not, you know the conditions. Okay, कि if the matrix of size 4 into 4, so you know that the last row and last column will be 3 3, and first row and first column, as all of we know that in all the matrix it always remain as 0. So we have to only check whether the element which we are going to print, it has the R0, R3, C0, 3, C3, and if any of these condition is true, it means that element belongs to the border element. So now see that the first time when the R is 0, C is 0, means you are at the first element 0 0. So we will check its row and column index ki whether R is 0, R is 3, C is 0 और C is 3. तो हमें पता है कि यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन बेटा ट्रू हो रही है, आर की वैल्यू 0 है, तो ये क्या प्रिंट कर देगा, मैट आर सी, मीन्स मैट 0 0, योर फर्स्ट एलिमेंट विल गेट प्रिंटेड. ओके, तो जो फर्स्ट एलिमेंट है वो क्या है, 10 है, तो 10 प्रिंट हो जाएगा और एक टैब. ठीक है, थोड़ी सी ब्लैंक स्पेस. इसके बाद यहाँ जाएगा नहीं एल्स में. ठीक है, फिर ये लूप ऊपर आएगा आपका सी प्लस प्लस, द वैल्यू ऑफ सी विल बी 1. सो नाउ वी मूव टू द सेकेंड एलिमेंट 0 1. 0 मीन्स 18. Again come inside and check the cell indexes of this element. if r is 0, r is 3, सही बात है, यहाँ पे भी r 0 ही है. ठीक है ना, क्योंकि आप बेटा फर्स्ट रो पे चल रहे हो ना, तो फर्स्ट रो के तो चारों एलिमेंट में r की वैल्यू 0 ही रहेगी. जैसे यहाँ 0 0 0 1 0 2 0 3, so r remains 0. So children, for all these four elements, you know r, the value of r will be 0, so every time the first condition will be true. So in the first two children, all the four values will be get printed. So 10, 18, 20 and 24, all these four elements will be printed on the screen. Okay, and after that when you will move out from the loop of C, the next statement we find that is system.out.println. It means the control will shift to the next line and then the outer loop will run. Okay, and you know that when the outer loop will run, the value of r will become 1. Okay, so r will be 1 for all the four iteration of C. Now come inside when the value of C is 0 to 3. So now the value of C, first time it will be 0, means the address of the element will be 10. Who is there at index number 10? That is 44. Now children, we have to find out whether this element belong to the border element or not. So you know that if R is 0 or C is 0, so you know that the address of this element is 10, so C is 0 here. Okay, it means the element belongs to the first column. Okay, so R equal to 0, no. R is equal to 3, no. C is 0, yes. तो आपकी बार क्या होगा, ये थर्ड वाली कंडीशन आपकी ट्रू हो जाएगी और ये वाला एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा, यानी कि आपका एलिमेंट 44 विल बी प्रिंटेड ऑन द स्क्रीन. ठीक है, इसके बाद अब यहाँ पे आइए जो हमें समझना है. ठीक है, अगली बार जब आप आओगे C प्लस प्लस, C की वैल्यू 1 हो जाएगी, मीन्स द एलिमेंट at 1 1 is 45, and we have to find out whether this element will be printed or not. So the R is 1 and C is 1. Now check all the four condition. If R is 0, no. R is 3, no. C is 0, no. C is equal to 3, no. So children, all the four condition gets false. What it means? When all the conditions are false, it means that this element does not belong to the border. Okay, it means it is a non-border element. And children, you know that we don't have to print the
non-border element. So then control will move to the else part and see what is printed there. system.out.print tab, और टैब के पहले क्या दे रखा है मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक दे रखा है, तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, एक ब्लैंक प्रिंट होगा और फिर टैब। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे आप। सी प्लस प्लस सी, नाउ द वैल्यू ऑफ सी विल बिकम 2 मीन्स योर सेल एड्रेस विल बी 1 2। कौन है यहाँ पे 1 2 पे ध्यान दीजिए, 40 प्रिंट होना है कि नहीं, नहीं प्रिंट होना है, आपको देख के पता चल रहा है कि ये एक इनर एलिमेंट है। ठीक है, तो फिर से वही आओगे तो R0 है नो, R3 है नो, C0 है नो, C3 है नो। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू क्या है 1 2, तो इनमें से 1 और 2 में कोई भी 0 या 3 नहीं है। ठीक है, यानी कि ये एलिमेंट भी प्रिंट नहीं होगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, कंट्रोल जाएगा एल्स में और क्या प्रिंट कर देगा, ब्लैंक स्पेस और टैब। और फिर सबसे लास्ट में आपके फिर से चलिए सी प्लस प्लस, वैल्यू ऑफ सी विल बिकम 3, यानी हमारा सेल एड्रेस क्या हो जाएगा 1 3। कौन है 1 3 पे, 65। बताइए प्रिंट होगा कि नहीं होगा, ये होगा। क्यों? क्योंकि ये बॉर्डर एलिमेंट है ना, बॉर्डर एलिमेंट है 65। यहाँ का सेल एड्रेस कितना है 1 3, तो आपको पता है कि यहाँ पे सी की वैल्यू 3 है, यानी ये लास्ट कॉलम को बिलोंग करता है। तो आपकी बार क्या होगा बेटा, व्हेन यू विल कम इनसाइड द लूप यू नो दैट 4 कंडीशंस आर देयर बट द फोर्थ कंडीशन विल बी ट्रू। इज सी इक्वल टू 3, यस। तो आपकी बार मैट आर सी, आपका ये एलिमेंट प्रिंट हो जाएगा 65। ठीक है, तो आपने क्या देखा बेटा, फर्स्ट रो कंप्लीट प्रिंट हुई, सेकेंड रो में केवल फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सी की वैल्यू 0 थी और यहाँ पे सी की वैल्यू 3 थी। ऐसे ही फिर अब आपका ये लूप टर्मिनेट हो गया, बाहर का लूप चलेगा और अब आपके आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अब आपका जो आर है वो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो अब की बार जो सेल एड्रेस होंगे वो क्या होंगे, 20 21 22 एंड 23। ठीक है, आई रिपीट, 20 पे कौन है 25, 21 22 एंड 23, यानी ये 4 टाइम चलेगा और इन 4 एलिमेंट्स को चेक करेगा। तो आपको पता ही बेटा क्या होगा, जब ये 2 0 पे होगा तो सी की वैल्यू 0 होगी और जब ये 2 3 पे होगा तो सी की वैल्यू 3 होगी, यानी केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट के लिए कंडीशन ट्रू होंगी। बाकी 75 और 38 में 2 1 और 2 2 इनमें कोई भी वैल्यू 0 या 3 नहीं है। तो यानी केवल फर्स्ट और लास्ट एलिमेंट प्रिंट होगा थर्ड रो में, दैट इज 25 और फिर लास्ट में 88। ठीक है, और फिर जब सबसे लास्ट टाइम जाओगे आप आर प्लस प्लस, आर की सारी वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 3 हो जाएंगी, यानी 4 टाइम लूप चलेगा, 3 0 3 1 3 2 3 3। ठीक है, सी का लूप चलेगा 4 टाइम। और आपको पता है कि इस बार ये जो चारों एलिमेंट हैं 3 0 3 1 3 2 3 3, ये सब आपके लास्ट रो के एलिमेंट है, सब में आर की वैल्यू कितनी आ रही है, 3 आ रही है। यानी इन 4 इटरेशन में बेटा एवरी टाइम द सेकंड कंडीशन विल बी ट्रू, आर इज इक्वल टू 3। सो व्हेन द सेकंड condition will be true for all the 4 times, so you know that the elements will get printed। तो यानी आपकी फोर्थ रो कंप्लीट प्रिंट हो जाएगी, दैट इज 56 87 एंड देन 57 एंड एट लास्ट में 32। ओके चिल्ड्रन, सो in this way only the border elements will be printed on the screen। I hope that all of you would be able to understand this problem easily। Okay, thank you very much।